So first of all, welcome you all to the today's space and thank you so much Hitesh sir आप invitation को accept करके आज space में speaker के लिए माने आप. Thank you very much for inviting me in this Twitter space. Yes. Nitesh ji. तो आपकी कोई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है सर. तो स्टेज इज ऑल योर्स. आप आराम से शुरू कर सकते हो सर. Okay, one few things which I want to tell that is make sure to have a notepad and pen with you, everyone who are part of the session, because points noted down, always noted down, the points will help you. Okay, so yes, it is by language, English or Hindi, जैसे आपकी comfort है, and the stage is all yours. Language I will use Hindi and English both one by one because क्या कई लोग हिंदी भी समझते हैं, कई लोग इंग्लिश भी समझते हैं. टेक्निकल जो वर्डिंग है वो हम इंग्लिश में ही रखेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ट्विटर स्पेस मिस्टर नितेश. टुडेज अपना आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट ट्रेड्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट ट्रेड्स. मैं कैसे ब्रेकआउट ट्रेड्स आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं कैसे उसमें ट्रेड करता हूँ, मैं आपको आज बताऊंगा. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो बहुत ज्यादा सबको पता है, सब लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो मैं उसको एक सपोर्ट आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. कोई नहीं, बोलिए. नहीं, एक्चुअली वो कॉल आ गया था इसमें. ओके. सो सपोज अपने एक सपोर्ट की बात करते हैं, तो मैं एक आपको पॉलिटिकल लैंग्वेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पॉलिटिकल लैंग्वेज में मैं आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ बीजेपी एंड पीडीपी के साथ, बराबर है. तो बीजेपी एंड पीडीपी ने उसमें जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बना दी. ओके, so PDP have taken support of BJP. Okay, whenever any suppose you correlate it with stock, then suppose this government is a stock. So whenever any stock takes support, then they gives they break out. Okay, अभी क्या हुआ? After a point of time, BJP have withdrawn their support. Now what happened? Whenever the BJP have withdrawn their support, what happened? Can anyone tell me? बीजेपी ने अगर अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो क्या हुआ? पीडीपी क्या किया? नहीं, उसमें ही मेन फंडा उसमें ही है. व्हेनेवर एनी स्टॉक ब्रेकआउट, इट फाइंड्स नेक्स्ट सपोर्ट. अंडरस्टूड और नॉट? सो पीडीपी ने क्या किया? दूसरा सपोर्ट ढूंढा, आइदर इन उमर अब्दुल्ला और आइदर इन कांग्रेस. सपोज दैट सपोर्ट आल्सो दे नॉट फाउंड, देन व्हाट हैपेंस? That means whenever any support breakout or breakdowns, then the whole stock or whole government have collapsed that. Okay, तो मतलब कि जब भी पीडीपी को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिला तो क्या हो गई? वहां की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लग गया. सेम थिंग होता है कि अगर कोई भी स्टॉक उसका सभी सपोर्ट, ईच एंड एवरी सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो वो एक भूगर्भ में चला जाता है. समझे कि नहीं आप? मैं कभी भी किसी मेरे स्टूडेंट को समझाता हूं तो मैं ब्रेकआउट जब भी समझाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? ऊपर सभी हवा है और नीचे पूरा भूगर्भ है. मतलब कि कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, बहुत ही लंबी रेंज ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर सिर्फ हवा होती है. तो हवा होती है तो हवा में कहीं भी जा सकता है. समझे कि नहीं आप? Yes. अगर कोई भी आदमी अगर किसी का रेजिस्टेंस अगर फाइंड कर सकता था तो आज की तारीख में एमआरएफ 86,000 का स्टॉक नहीं होता. अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि एमआरएफ क्या है? एमआरएफ 30,000 था तब भी उसका लाइफ टाइम हाई था, उसके बाद 40,000 है तब भी उसका लाइफ टाइम हाई हुआ. तो व्हेनेवर एमआरएफ वाज गोइंग टुवर्ड्स ईच एंड एवरी हाई, इट फॉर्म्स न्यू सपोर्ट्स एवरी टाइम. ओके, तो जब भी ऐसे स्टॉक ऊपर जाते रहते हैं तो वो एक अपना नया सपोर्ट लेवल बनाते रहते हैं. ओके, तो इसीलिए जब भी कोई 52 हाई बनाता है या लाइफ टाइम हाई बनाता है तो उसमें ट्रेड करना बहुत ही इजी रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपर सिर्फ हवा है. मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. ऐसे मैं और जब भी ट्रेड करता हूँ, कोई बार मेरा ट्रेड रॉन्ग जाता है तो मैं
मितेश से पूछता हूँ कि यार ऐसा हुआ, मेरा ट्रेड रॉन्ग गया। तो एक बार मैंने इंडिया बुल हाउसिंग में 300 350 के आजू बाजू एक साल 2 साल के पहले मैंने ट्रेड किया था। तो मैंने उससे बात की कि भाई मैं इंडिया बुल हाउसिंग में मैंने लॉन्ग किया और मेरा लॉन्ग बराबर हुआ नहीं और मैं आज लॉस किया इंडिया बुल हाउसिंग। तो उसने बहुत बहुत ही अच्छी चीज बोली थी। व्हाट ही टोल्ड दैट इंडिया बुल हाउसिंग वाज cracking down from 1100 levels till it is going down and from 500 400 300, now at 300 level you are buying. Understood? At 300 level you are buying, but there are multiple resistance till 1100 level. मतलब कि आप जब भी जहां भी बाय कर रहे हो उसके ऊपर रेजिस्टेंस है ही। कोई ना कोई जो भी आदमी ऊपर ट्रैप कर हुआ होगा 400 लेवल पे, 350 लेवल पे, 500, मतलब ईच एंड एवरी लेवल आर रेजिस्टेंस लेवल फॉर सच टाइप ऑफ स्टॉक। Same time happened in India, IndusInd Bank, same happened in Bandhan Bank, same happened in RBL Bank। मतलब कि कोई भी स्टॉक अगर उसका ईच एंड एवरी सपोर्ट तोड़ता है तो उसमें लॉन्ग करने की कभी भी कोशिश मत करना। आपको याद होगा यस बैंक में हुआ था। यस बैंक व्हेन यस बैंक वाज ट्रेडिंग अराउंड 420 लेवल, उसने नीचे नीचे ब्रेकडाउन चालू किया था, थ्री ब्लैक क्रॉस करने चालू कर दिया, देन आफ्टर इट हैव टच्ड द 300 लेवल। तो पब्लिक ऐसे बोलने लगी भाई 300 पे तो ये ब्लाइंड बाय है। यस बैंक वाज ब्लाइंड बाय एट 300 लेवल because everyone was going towards the fundamental of the yes bank, but they are not knowing that the each and every supports are breaking out। धीरे धीरे उसने 300 लेवल का भी ब्रेकडाउन किया, 200 किया, 100 किया, तो भी पब्लिक ने उसको बाय किया बाय किया बाय किया। देखो सेम टाइम होता है कि रेजिस्टेंस लेवल पे देयर आर मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ सेलिंग। तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो पब्लिक उसमें सेल करना ज्यादा पसंद करती है। तो वो रेजिस्टेंस आप पिवोट रेजिस्टेंस भी गिन सकते हो, पिवो रेजिस्टेंस भी गिन सकते हो। लेकिन अगर ऐसा टाइप का स्टॉक हो, सपोज सीडीएसएल का टाइप का स्टॉक हो, आप सीडीएसएल में देखोगे तो पर्टिकुलर उसका वीकली चार्ट आप देखो, कंटिन्यूसली वो एक ही लाइन में एक पैरेलल चैनल में ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था। तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो व्हेन यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ स्टॉक, तो उसमें आपको पैरेलल इंक्लाइंड या ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड वेन एवर यू सी सच टाइप ऑफ ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो उसमें आपको ट्रेड लेना ही है। यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, यू हैव टू टेक द ट्रेड, एग्जीक्यूट द ट्रेड। फियर को आप एक साइड में रख दो, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि आप एग्जीक्यूट करोगे तो ही आपको आपकी गलती पता चलेगी कि मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और वो वापिस आ गया। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Suppose you are talking about the breakout, तो whenever your resistance is breaking out तो it is called as a breakout। रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट करते हैं। जब भी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है स्टॉक तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। नाउ देयर आर मल्टीपल चांसेस ऑफ ब्रेकआउट टू बी फेलियर और ब्रेकआउट टू बी सस्टेन। अंडरस्टूड? मैं कल ही शायद एक स्टॉक का रिसर्च कर रहा था, एक छोटा सा स्टॉक था। मैंने छोटा सा स्टॉक है उसको देखा, मैं बोला ये क्या है स्टॉक, उसको मैंने नाम याद नहीं, कानानी इंडस्ट्रीज, यस यस कानानी इंडस्ट्रीज। आई वाज चेकिंग आउट दैट स्टॉक। उसमें क्या देख रहा हूँ, वो मल्टीपल, मतलब वेन एवर इट हैव गिवन अ ब्रेकआउट, एक्चुअली इट वाज क्लोजिंग इन सर्किट एवरी डे, बट वेन एवर आई सी दैट इन वीकली चार्ट, व्हेन आई हैव सीन, तो उसने वीकली ब्रेकआउट दिया, वीकली ब्रेकआउट ऑफ लास्ट जुलाई 2021 टू लास्ट वीक 2021 में उसने वीकली ब्रेकआउट दिया। whenever it have given a weekly breakout, then it was when came in my radar that it have given a weekly breakout which is continuously closing in the upper circuit. What should we do? Okay, it was a completely exact level of 14 rupees 50 paisa that it stock was completely closing around its resistance. Now again it was starting up its circuit and it have completely reached towards 18 rupees now. It was a very penny stock. I don't know the fundamental, and I am telling you once again that I never see fundamental of the stock when I checking the technical of the stock। मैं जब भी टेक्निकल चेक करता हूं तो मुझे फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। चाहे इन्फोसिस ला दो, चाहे रिलायंस ला दो, चाहे कानानी इंडस्ट्रीज ला दो 14 रुपया वाला, I have nothing to do with the fundamental of the stock। Whenever I see any stock, I execute it without checking the name of the stock।
बस एग्जीक्यूट करो, आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है। चार्ट में देखो, चार्ट में सस्टेन होता है ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट कर लो। एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग। अभी वो स्टॉक देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो मल्टीपल टाइम्स कैसा होता है, देर आर 3 or 4 phases ऑफ ब्रेकआउट। सपोज एनी स्टॉक इज गिविंग अ ब्रेकआउट, might this happen that it retest its level, then again going back towards its another level। जब भी रिटेस्ट करके स्टॉक फिर से ब्रेकआउट दे, then that type of breakout is very strong breakout and you have to trade in such type of stock। सेकंड टाइप ऑफ ब्रेकआउट में होता है कि ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट करने की जगह नीचे फॉल्स ब्रेकआउट करके सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है उससे नीचे चला गया, देन अगेन रिवर्स। तो दैट whenever you see such type of breakout and false break, उसको फेक आउट भी बोलते हैं, तो you have to use the pivot points। तो pivot are used to check out that suppose it is reverting or it is sustaining that pivot point or not। तो मैंने आपको अभी कानानी इंडस्ट्रीज के बारे में बोला, तो एक्चुअली कानानी इंडस्ट्रीज वाज एट वीकली ब्रेकआउट लास्ट वीक विथ R5 एज द रेजिस्टेंस। Suppose anyone is with laptop and he can check the chart, that stock was at weekly breakout and at R5 resistance। So whenever you check the breakout level and if it is above the R5, मतलब मैंने कहा क्या, जब भी R5 के ऊपर चला जाए आजू बाजू देखो सिर्फ हवा है, सिर्फ हवा आपको 1-2 साल के आजू बाजू दिखने लगे, मतलब वो हवा में अगर आपका पैराग्लाइडर है, वो if you glide in the air, then you can go anywhere around। Okay, what is your capacity to glide? It is depends on you। how much you have to glide, that is depends on you। आपको अगर ग्लाइडिंग में हो गया, अगर वो ग्लाइडर नीचे आ रहा है तो आपको एग्जिट हो जाना है। सिंपल थिंग, whenever it breakouts its weekly closing price, you have to exit that stock। मैं आपको 2-3 और स्टॉक बताता हूँ। सपोज आई हैव रिसेंटली लास्ट वीक बिफोर 2-3 days आई हैव सेड किंगफा इंडस्ट्रीज, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी चार्ट। एक्चुअली इफ यू check out the chart, suppose it is a weekly breakout of the Kingfa science and technology, and suppose you check out the weekly volume of the chart, then it is a strong highest volume। That is the highest volume after May 2021। This is the highest volume। If you check out the whole chart, whole lifetime chart, then after from 2016 to 2021, it is the highest ever volume। And now if you check out the chart, Kingfa have been reversed from 1,500, from 1,600 level। That 1,600 is the R5, that means R5 रेजिस्टेंस लेवल। मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपको कोई भी स्टॉक में अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला ट्रेड लेना है, तो R5 के ऊपर जब भी आज चलने लगे और वीकली ब्रेकआउट सस्टेन करने लगे, तो हवा ही है ऊपर, ग्लाइड करते जाओ बस शांति से। ओके, if you convert this Kingfa's chart into the daily chart, you can check that Kingfa have given a daily breakout on the 27th of December। Breakout have sustained, then breakout have been retested at 1,300 level, then again it have went up। This was the perfect picture that I have to select this stock, and I have bought that stock at around 1,415 level। जब भी ये डेली ब्रेकआउट सस्टेन करके ब्रेकआउट कर दिया, आई हैव एंटर्ड इन दैट स्टॉक किंगफा। नाउ व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? इफ यू हैव ओपन्ड द चार्ट, व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? सपोज यू सी द 27th May chart, that 27th May was the Marubozu candle of the daily chart। So that Marubozu's low 1,150 price level is my stop loss। Okay, so I can risk my 20% here in Kingfa Science and Technology। Now I am expecting 40 to 50% return from Kingfa Science। Okay, because by checking the volume, by checking the weekly breakout, and by checking the multi-year breakout, that this stock can go very high। Okay, but I am waiting for the breakout of that R5 and closing above the 1,600, then I will add 2x quantity in Kingfa। Suppose I have right now 40 quantities in Kingfa industry। Okay, suppose this stock will break out 1,600, then I will buy another 2x quantities in this stock।
Because what I believe in conviction. Okay. Suppose you have conviction stronger in this stock, तो क्वांटिटी उसमें ऐड करो, छोटी छोटी क्वांटिटी 5-5 10-10 लेके 50 शेयर में रख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला. Okay. एक शेयर में रखो, बड़ा करो, बड़ा क्वांटिटी रखो, बड़ा प्रॉफिट लो, निकल जाओ. फिर उसमें 5% भी मिले लेकिन बड़ी क्वांटिटी होगी तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा. समझे? लेकिन बट whenever your conviction level is high, then only you have to add the quantity. Until and unless you have to add that minimum quantity, what risk you can take? Suppose I have taken 50,000 rupees quantity, 20% is my stop loss, then I can bear 10,000 loss from this trade. Okay. Suppose at the breakout of 1,600, I am extremely I have extremely conviction that this stock can reach towards 2,000 level. I will add double quantity here. Okay. बिकॉज अगर वो 1800-1900 तक भी गया तो मेरी क्वांटिटी तो एवरेज प्राइस से लोअर ही होगी. क्यों? बिकॉज माय एंट्री प्राइस वाज 1450 रुपीज अराउंड. ओके. तो उस हिसाब से आपको जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो उस हिसाब से ही आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी पड़ेगी. सपोज you are if you are my follower and you are checking my timeline, then I have shown one chart of one stock of Anupam Rasayan. I have written down there that if Anupam Rasayan closes above 850 level, then target will be 4 figure and 1 lakh का उठा लेना. What I have written, 1 lakh का उठा लेना. Suppose I have 20,000 or 25,000 rupees quantity, then I have bought at that time 4x quantity in Anupam Rasayan. Okay. Suppose you check out the chart of Anupam Rasayan. I have opened the chart. Anupam chart मेरे सामने है सच, मैं भी चेक कर रहा हूँ. Yes. Suppose you convert that chart into weekly chart. Okay. Suppose you check out the 12th July 2021. That peak was 850 level. Yes. After that, second time it have tried on 27th of September to break out that 850 level. Yes. Then, but it could not break out. Yes. After after third week. After third week also it have tried to test out that it have tried to break out the 850 level. Yes. Check out that again it have reversed from that level. Again after 8th November, on 8th November it have tried to break out, but it couldn't close above 850 level. It couldn't close. Yes. Check out this. 8th November. Yes. उसके बाद second week also 15 November. 15 सेम हुआ. मतलब कि उसने कंटिन्यूअसली वो मैंने आपको क्या बताया, जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट कर देता है तो मतलब आपको टूट पड़ने का है उसमें. तो देखो उसने कितना ट्राई किया. वीकली में बोल रहा हूँ, डेली में नहीं बोल रहा हूँ. मतलब वीकली रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस for 1 time, 2, 3, 4, 5 times. And again I am telling you, on 13 December also it have tried to break out that 850 level. But it couldn't. So that means 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 times it have tried to break out the 850 level, but it haven't break out that level. Or last week on 20th December it have break out and closed at 900 level. Yes. Okay. Sir, अभी जो ब्रेकआउट हो गया, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर. जस्ट ट्रेडर्स हु आर इन द सेशन, just along with the sir which is Hitesh sir is explaining, आप चार्ट सामने रख लो. Open the chart. It is Anupam Rasayanam. Just give me sir just 30 seconds. Okay. So traders, just make sure to open the chart so that you can understand more clearly. Okay. तो चीजें more clearly समझ आने शुरू हो जाएंगी. जो भी सर लेवल बोल रहे हैं, जोन बोल रहे हैं, चार्ट सामने रख लो. बिकॉज इन ट्विटर स्पेस वी कांट शो द चार्ट, सो दैट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि चार्ट सामने रख लो तो आपको सीधा समझ आना शुरू हो जाएगा. बिकॉज जब हितेश सर और एग्जांपल्स बोलना शुरू कर देंगे, आप बिना चार्ट के सामने बैठे रहोगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम. विदाउट अ चार्ट वी कांट अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स. Shortlist your stock as per your watch list, as per cash, as per future, as per Nifty 500, whatever you are interested. You can shortlist your screener as per your interest. Okay. Now what you have to do after every day or every week, you have to check out what number of alerts it have given. Suppose recently on 27th December there are multiple stocks have given a weekly breakout.
Okay, suppose Kilij drugs. I am opening the Kilij drugs. Now I have opened the Kilij drug. Okay. Hope everyone have opened the Kilij drug chart. Yes, yes, go ahead. Okay. Okay. Suppose you check out the chart. It is a weekly breakout chart. Okay. And yes or no? Yes, yes, sir. Okay. Okay. Now if you insert your pivot points inside that, then it is exactly towards the R4. That means 252 level is R4 and it is closing around 250 level. So I will wait to break out the R4. Even suppose I have to take strong breakout. Now you minimize the chart. Suppose you minimize the chart, check out there. It is again a resistance at 7th January 2019. Check out the chart. Yes. 2019 का resistance है. Second time 26 July 2021. Now recently this week it have given a breakout. Okay. Now 2019 28 January 2019 का resistance कहाँ है? 240 level. That means it have broke out two resistance zone 230 to 240. Check out the chart. You can easily understand that how that stock have given a multi-year breakout. Now imagine the story of that 2019. If you check the chart on January 2019, there was a highest volume on that day. There was a highest volume on 2019. Check out that. Then after stock have given a reversal sign and it have given 70 level also during Corona. Now that buyers of 2019 have exited on 26 July. Check this. That means profit booking came here on 26 July. Now the praise buying have seen. Check this. Last week volume. Check out the last week volume. Check the volume. Highest volume of approximately 8th to 9th month. Yes. Highest volume. Now suppose this breakout sustain, and if it have given a breakout of 290 level of R5, then it will again give you around 350 to 340 level. No. So you have to shortlist such type of stock by multiplying number of. Suppose I have implied resistance here. Suppose I have implied pivot resistance here. Suppose I have implied weekly breakout here. So you have to collect number of your studies into one stock. After that, you can consider that suppose that this stock is exactly what I am finding. Now, suppose this happened. Suppose it may happen that this stock may reverse back towards 220 level, breakout retest, and again it give breakout of 250 level. जब भी ये रिटर्न आए रिटेस्ट करे और ब्रेकआउट दे दे 250 का, तो आंखें बंद करके ले लेना, फिर मुझे पूछने मत आना. ओके. तो एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. आप भी एग्जीक्यूट कर लो. लॉस वॉस क्या है? 5-10 स्टॉक लोगे, 5 में लॉस होगा, 5 में फायदा होगा, 5 में लॉस 20% का होगा, 5 में फायदा अगर मल्टीबैगर हो गया तो मतलब आपको क्या चाहिए फिर? 5 suppose you are taking 5 stock and 40% return in each stock after holding that quantity, तो उसमें आपको ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहने वाले. ओके. तो लाइक दिस आई एम ट्रेडिंग इन वीकली ब्रेकआउट. तो मैक्सिमम टाइम में वीकली ब्रेकआउट ही यूज करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. और आई वुड लाइक टू गिव वन रूल ऑल्सो टू ऑल द लिसनर्स रिगार्डिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग. जब भी आपको करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट लो बराबर है. लेकिन whenever you have to take the investment decision for portfolio or for investment, for long term investment, for medium term investment, then always trade or always check the weekly chart only. Weekly chart will remove all the whipsaws from the chart. Weekly chart will remove all the whipsaws, all the news or noises from the chart, and it will give you exact picture. सपोज यही क्लीज ड्रग का आप डेली चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको देखो 1-2 सर्किट लगेगी, 1-2 डोजी दिखेगी, मतलब कि आपको वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा. समझो आप.
Okay. इसी को आप डेली में कन्वर्ट करोगे, देखो देयर इज अ टोटली विप्सोस इन दिस चार्ट, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन इसको अगर आप वीकली में कन्वर्ट कर दोगे तो देन यू कैन सी दैट very smooth flows in this chart. Okay, so these was the Killich drug chart. So I have recently talked about Anupam Rasayan, recently talked about the Kingpa Science and Technology. One more chart I have shared in my Twitter profile, Gati Limited. Actually Gati Limited was given at the rate of 194 around. Suppose you open the Gati chart, check out the chart of Gati Limited. So suppose you open the chart, though it was a breakout of 28th of June 2021. So 28th of June 2021, it have made the high of 180 level. Yes. Then it have been reversed. Now it have again tried on 8th of November to break out that level. Again it was reversed. Profit booking came. Yes. Reverse till 140 level. Again on 13th December, it have tried to break out that 180 level. Again, it will have closed around 165. Now, it was the time on 20th December week, it have given a breakout of weekly resistance and closed around 190 rupees. And it was the perfect time that I have picked that stock, Gati Limited. Okay. Now I have selected this, so I have invested in this stock. Okay. After 192 around, it have given a high of 205 rupees. Now it is towards a retest level. Check out this. Yes. It is towards a retest level. Now it have formed a inverted hammer. It have formed an inverted hammer. Suppose it don't retest and again break out, then I will buy double quantity on, and about 205 level I will buy double quantity because that weekly breakout have sustained, that weekly breakout have retested, that weekly breakout have retested and again broken out. Okay, that gives me double confirmation that this stock will go up towards more 15 to 20 or 25 to 30% from 205. Now suppose that also happens, this stock will reverse down. Now give me the reason why this stock have reversed from this level. Suppose any listeners are there, give me the reason why this stock have been reversed. Though it have given a weekly breakout, why this stock reverts back? Suppose you give any listener chance to ask the question and answer the question why this stock have returned back. Okay. Any listener were trying to? Yes, anyone who's ready or trying to give an answer. It's not like if you are wrong, no problem. Just give an attempt to try to answer this. If anyone is ready, just send me a request. I will allow you to speak. देखो रॉन्ग सब लोग हो सकते हैं, मैं भी रॉन्ग होता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का. देखो ट्रेडिंग करोगे तो रॉन्ग होगे, जो ट्रेडिंग ही नहीं करता है घर पे बैठा रहता है वो रॉन्ग नहीं होगा. समझे कि नहीं आप? Yes, sir. Ravindran sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can answer your question. Answer this. Give an answer for this question. Resistance लिया सर, गति में. Yes. Pardon. R2 pivot, standard pivot R2 से सर resistance लिया. Yes. Very good. Yeah, exactly. Suppose you check out the 20th December weekly chart. It have given a high of 198 or 200 level. That 198 or 200 level is R3 resistance of pivot. Understood or not? Now again, second week, it have tried to close about that pivot, but couldn't sustain about that pivot. That again gives you a clarification that pivot point is very useful in trading. अगर ये वीकली देखो, वीकली ब्रेकआउट दिया तो किसमें दिया? उसने R2 एंड R3 के बीच में वीकली ब्रेकआउट दिया है. समझो आप, R2 और R3 के बीच में उसने वीकली ब्रेकआउट दिया है, तो वो R3 आपका रेजिस्टेंस हो गया और वो रेजिस्टेंस अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है. तो अगर मेरी ये वीकली चार्ट में वो अगर मैं डेली चार्ट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ये 169 लेवल दिख रहा है आपको R1 के नीचे. डेली चार्ट में कन्वर्ट करो 23 दिसंबर. Yes, R1 175 है. Yes,
या R1 अपना 175 है और उसके नीचे की जो कैंडल है जो लो है, द लो इज इक्वल टू ओपन, द लो इज इक्वल टू ओपन ऑफ द कैंडल, 170 इज माई स्टॉप लॉस हियर। मेरी क्वांटिटी लो है, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर करो, समझो आप, अगर ये 205 को ब्रेकआउट कर दिया तो मेरी क्वांटिटी डबल या ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसमें एक ही स्टॉक में से मुझे मल्टीपल रिटर्न लेना है। अंडरस्टूड और नॉट? तो whenever you have strong conviction, you have to add multiple after you check the confirmation of the chart. जब तक confirmation नहीं मिल रहा है, limited quantity लो और limited trade करो। Understood or not? Yes. Hope Mr. Ravindra, hope your query, अच्छा रविंद्र ने जो आंसर ही दिया है। Yes. So that was nice answer, Mr. Ravindra. Thank you very much. Thank you. So great. This is what all about. इसीलिए मैं I was again and again telling you, open a chart in front of you whenever sir is telling a stop. तो वहीं पे आपको breakout समझ आएगी. Okay. Sir, अभी one question which I have got in my Twitter DM, that is breakout identifying. You have told about to looking at the resistance, pivot levels. How do you decide the target? कि ये इतना % जा सकता है, उतना जा सकता है? How do you decide the target? This is one question which I have received in my Twitter DM. देखो आप अभी उसी को, वही चार्ट, सपोज गति को ही पकड़ो चार्ट, बराबर है। Suppose you have opened the Gati chart. Now suppose it break out the 205 level. Then check out the R4. R4 is around 244. Yes. R4 is around 244. So my first target is 240. Okay. Okay. Suppose second target will be 285. Okay. Now check out, minimize the chart. Now you can check the again next R5 around 2017. Yes. That is around to 340 level. That is my long-term target. Suppose this breakout sustained and it reached in air, then my long-term target will be 340. So तो आपको ये इसमें पिवोट ही डालना है। ये पिवोट ही डालना है, तो आप मिनिमाइज करते जाओगे, आपको नंबर ऑफ R5 मिलने लगेंगे। आपको नंबर ऑफ R5 अगर आप देखने लगोगे तो 2015 का R5 है 1050 रुपीज, 2015 का आ रहा। तो मतलब जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता रहेगा, वो प्रीवियस R5 और प्रीवियस R4 को पकड़ता रहेगा और आपका R4 R5 वो कंटिन्यूअसली उसमें ऐड होता रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो लाइक और अगर आपको ब्रेकआउट दे देता है वीकली का और वीकली लो सस्टेन करता रहता है, ऊपर जाता रहता है, तो आपको उसको ट्रेल ही करना है। टारगेट भूल जाओ। टारगेट अगर प्रेडिक्ट कर सकते तो एमआरएफ 86,000 नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं आप? देखो एमआरएफ जब एमआरएफ वाज 30,000, मैंने सुना था टीवी पे भी कि 30,000 का शेयर होगा एमआरएफ, कितने जाएगा ऊपर। स्टॉक दे आर नॉट स्प्लिटिंग द स्टॉक, they are not giving bonus in the stock, then though also it is a 30,000 rupees MRF stock, अभी कितना ऊपर जाएगा? तो 30,000 का 40,000 हो गया। 40,000 हो गया तो सेम थियरी चालू हो गई। 40,000 क्या हो गया? क्या 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 86,000 हो गया। समझो आप? मतलब कि स्काई लिमिट होता है जब भी वो एयर में चला जाता है। तो आपको ऐसे ही स्टॉक पकड़ने हैं। ओके सर, जैसे आपने वो MRF की बात की, those traders, anyone who is opened MRF chart in front of it, the sir was trailing an example of 30,000, right? Same exactly that was R3 का level sir. उसका लो ब्रेक नहीं किया, वीकली लो ब्रेक नहीं किया, that was an open low for the week. हाँ भाई, तो ब्यूटी है यार अपना इसकी। Then this is what, make use of it sir. This is all about, this session is all about no time pass. Make use of it with the help of chart which is in front of you. 100%. Yes sir. Go ahead sir. You can आराम से go ahead. यस अभी और एक आध दो स्टॉक की हम बात कर लेते हैं, या किसी और को कोई क्वेरी हो तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार आप थोड़ा सा आपका जो भी कंप्लीट कर लो सर, एक बार, तो उसके बाद डाउट्स एकदम से एक स्ट्रेच में ले लेंगे सर। हाँ देखो, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल ही बताता हूँ कि जो स्टॉक मेरे रडार में आए हैं। सपोज अभी छोटा वाला जो एक स्टॉक मेरे रडार में आया है, अल्फा लेबोरेटरी, तो है बहुत ही छोटा वाला स्टॉक, लेकिन सपोज आप अल्फा लेबोरेटरी को पकड़ लो और आप उसका चार्ट ओपन करो तो आपको देखने को मिलेगा वो वीकली ब्रेकआउट दिया है उसने दिस वीक पे। ओके तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वाज ऑन 19th of April 2021,
सेकंड वीक उसने ट्राई किया, देन आफ्टर इट हैव रिवर्स बैक. उसने अगेन 6 दिसंबर को ट्राई किया, 6 दिसंबर को एग्जिट हाई बनाया 73 for 40 का, अगेन रिवर्ट बैक टू 52 लेवल. मतलब 73 ब्रेकआउट नहीं दिया लेकिन 52 नीचे आ गया. नाउ दिस वीक इट हैव कंटिन्यूअसली गॉन अप एंड इट हैव क्लोज्ड at upper circuit, closed at 20% upper circuit with highest buying and around the 79 rupees. ओके, तो ये मेरे अभी एक रडार में होगा. अभी उसको आप मिनिमाइज चार्ट करोगे आप, तो आपको 2016 का लेवल देखने को मिलेगा जो 91 रुपीज का है, वही अपना R3 है. Yes. तो मेरा इसमें टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा. अंडरस्टूड और नॉट? Okay. बिकॉज इट वॉज अ रेजिस्टेंस ऑफ 91 रुपीज ऑफ 2016. अगर वो 90 लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, अगर ये मुझे मिलना, अगर कल मैं उसमें ट्रेड करूं मुझे मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, तो मैं 91 का अभी टारगेट रखूंगा. अगर ये R3 और 91 सेम लेवल पे है, इफ इट हैव ब्रेकआउट एंड सस्टेन, देन आई विल टेक इट फॉर 110 लेवल. ओके, तो मैं ये अल्फा लेबोरेटरी इज माई इन रडार. और अभी एक मैं आपको बहुत ही एक अच्छा वाला स्टॉक बताने जा रहा हूँ. एक है बहुत ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया उसने, मल्टी ईयर ब्रेकआउट. आप अगर उसने बात नाम सुना हो तो क्रेप्स बायोसाइंस, क्रेप्स बायोकेम, Okay. KREBS बायोकेम. होप यू हैव ओपन द चार्ट. क्रेप्स बायोकेम, KREBS बायोकेम. ओके, अगर आपने देखो तो वो 201 लेवल पे क्लोज हुआ है. It have made high of 227 level. Now you minimize the chart. Slowly minimize the chart. Okay. Now if you minimize the chart, then there is a level of 2018 where it have made high of 200 level. Check out the chart. 200 लेवल पे उसने हाई बनाया था, नीचे आ गया था फिर 59 रुपीज पे. अभी उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वही 200 लेवल पे 20 सितंबर 2021 में वही 200 लेवल से फिर से नीचे आ गया था. नाउ अगेन एट सेम लेवल दिस वीक इट इज अराउंड सेम लेवल. ओके, 227 का हाई बनाया है, 201 के नीचे क्लोज हुआ, तो अभी ये रेजिस्टेंस पे ही है, रेजिस्टेंस जोन में ही है. अभी 227 ब्रेक करने के बाद ही मैं चेक करूंगा. अभी उसको मिनिमाइज करो और मिनिमाइज करो, मिनिमाइज इट. Suppose you minimize it, then you can check out the 2000 level. Yes. मतलब कि 2000 की साल में वो 227 के लेवल पे था. That means suppose और थोड़ा मिनिमाइज करो तो 1999 में 246 के लेवल पे था. Now if you check out that this is a completely W pattern. Yes. Completely W pattern, completely multi-year breakout may happen. Suppose it closed about 255 level. अगर 255 भी नहीं तो 230 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो ये मल्टी ईयर मतलब कि 22 इयर्स ऑफ ब्रेकआउट होगा क्रैप्स बायो का. नाउ if you go around, check out the below, check out the volume. Volume has spiked आप नीचे वॉल्यूम देखो तो ये सितंबर 2021 में हाईएस्ट वॉल्यूम था. देन अगेन दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम लास्ट वीक, सॉरी. तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो 20 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहा है. दैट मीन्स सम बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक. दे आर ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस स्टॉक एंड इफ दिस ब्रेकआउट सस्टेन देन दे विल टेक दिस स्टॉक एट समथिंग न्यू लेवल. तो अपने को यही करना है, अच्छे वाला स्टॉक ऐसे ढूंढो, बराबर है. थोड़ा छोटा मोटा रिस्क रिवॉर्ड लेके पकड़ रखो. पहले स्मॉल क्वांटिटी लो, सस्टेन करने लगे थोड़ा और करो, सस्टेन करने लगे तो बहुत ही डबल क्वांटिटी लो. अंडरस्टूड और नॉट? यस्टरडे मेरी एक बात मेरे फ्रेंड से हुई. आई हैव टॉक्ड विद माय वन ऑफ माय फ्रेंड. ही हैज मैक्स हेल्थ केयर एट 160 रुपीज लेवल. I have told that you are very good here. You have very good knowledge of fundamental energy. You have selected good stock at 160 level. Then I have asked him what quantity you have. He told me that I have 100 quantity. That means he have invested 11,000 rupees around 160 level.
मैं बोला यार बहुत ही अच्छा है, लेकिन why you have taken that quantity only, though you are a, तो बोले मैं ऐसे ही लेता हूँ। देखो अभी वो शेयर 116 वाला 440 हो गया, मतलब उसकी क्वांटिटी छोटी है। अभी मुझे जब भी मुझे पता है उसने जब भी मुझे मैक्स हेल्थ के हेल्थ केयर के बारे में बोला था, उसका कन्विक्शन हाई था, तो भी उसने छोटी क्वांटिटी ली। लेकिन जब भी उसने मेरे ग्रुप में डाला दैट आई हैव बॉट मैक्स हेल्थ केयर एंड विद आई हैव वेरी गुड कन्विक्शन, तो दो ही हैड बॉट 100 क्वांटिटी, my 2-3 group member have bought 200 and 300 quantity more than him. समझे आप? तो मतलब कि उसका कन्विक्शन है, क्वांटिटी दूसरे लोग ज्यादा है। तो वही चीज है कि जब भी दूसरे का कन्विक्शन होता है और आपका कन्विक्शन डबल हो जाता है, तो आपको उसमें क्वांटिटी ऐड करनी है। फिर आप छोटे 5% या 10% टारगेट में भी निकल सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी होती है तो प्रॉफिट भी इतना बड़ा रहता है। तो मैं जनरली ऐसा करता हूँ, वेनेवर मैं देखता हूँ। देखो अगर आपको पता होगा कि नहीं, अनुपम रसायन मुझे आईपीओ में मिला था। ओके अनुपम रसायन मुझे आईपीओ में मिला था, तो आईपीओ की क्वांटिटी, आईपीओ वाज अराउंड 660 रुपीज। तो मेरी आईपीओ के बाद वो नीचे चला गया था 466 के लेवल के अराउंड। देन आफ्टर आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। और जब भी आईपीओ के इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज का है समझो आप, लेकिन ये जब भी इसने 850 ब्रेकआउट दिया, तो मैंने उसमें 500 क्वांटिटी ले ली, समझो आप, क्योंकि उसमें अभी मेरा कन्विक्शन मल्टीपल हो गया। तो अभी मैं सपोज ये 990 का 1100 भी आएगा, तो मेरी क्वांटिटी डबल है, ट्रिपल है, 4x है, तो मैं उसमें से लेस टाइम में हाई प्रॉफिट निकाल सकूंगा। अंडरस्टूड? अभी अनुपम रसायन मतलब देखो तो आप उसमें वीकली ब्रेकआउट भी हुआ है, सस्टेन भी हुआ है, और ब्रेकआउट को ऊपर ही ले जा रहा है। उसने रिटेस्ट की कोशिश ही नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया था। Okay, so I think this is enough for today. We have discussed a number of stocks. Suppose any listener have any query regarding any stock or how to identify the resistance, then also they can ask the question by permission of Mr. Nitesh Kumar. Yes, sir. So anyone have any question, just make sure to just send me a request. I will allow you to speak one by one. Kamlesh sir, Kamlesh Uttam sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your questions. Yes, Mr. Kamlesh, your mic is turned on. Just turn on your mic and you can ask your question, Kamlesh sir. Okay, he's not responding. Somyagar sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Okay, Kamlesh sir, are you ready to speak? Ask your question. Yes, Mr. Kamlesh. Mic is on. Can you listen me? Yes. Yes, sir, Mr. Kamlesh. Yes. Okay. So actually, I couldn't listen much of the discussions. Yes. Just I have joined it. Can anyone little bit brief me what is the agenda of this? Sir, you will get the recording of this session later on, sir. Okay. Okay. It's okay. Thank okay, you. carry on. Okay, Somyagar sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Akshat Zain sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Yes, Akshat Zain sir, just turn on your mic and speak. Hello, can you hear me? Yes, sir, go ahead. Yes. Sir, you were talking about some R2 and R3 resistance. Is there a identified Yes. way how to draw these lines, or these are just observed on the chart? No. Yes, actually you have to select the pivot resistance from charting or from TradingView, any of the platform you are using. Okay. Any of the charting platform you are using. Suppose I am using pivot point standard, very standard level of pivot points.
you have to select that pivot point standard indicator from your trading view or whatever platform you are using. Suppose you are using a Zerotha, then suppose I am telling you in Zerotha also there is pivot point. You can use it. I think everyone are giving pivot points standard in their indicator, so you can use it everywhere. Okay. No problem in this. Just select it and use it. Okay. And on those pivot point, once we draw the horizontal line, it will become R2 and R3 resistance like that. No. It will automatically. It will. Yes, it will automatically place the R2, R1 to R5, and in below S1 to Okay. S5, support 1 to support Okay. 5. It will automatically Okay. trace. And there is no setting like we have in EMA and like, okay, No. it's just standard. You don't have to do anything. Suppose you can change the color of the pivot lines. Suppose you are strongly believing in R5, so then you can change the color of R5 as per your convenient. You can change the color, okay, and you can use it. There is nothing in it. Thank you so much. Suppose I have opened the Zerotha platform kite, and I have opened the chart of KPR mill. Suppose KPR mill. If you check out the chart, KPR mill. Okay. Now check out the chart. There is no completely uptrend and completely hyperbolic uptrend. Check out the KPR mill chart. Completely hyperbolic uptrend, and completely it is taking the support of exponential moving average of 21. Now if you go towards the studies and select pivot, then you can find out the pivot points. Yeah. Okay, that will automatically places in your chart. Now if you select that pivot and right click on that, you can edit the settings. You can change your colors from there. Okay, there are support 1, 2, 3 and resistance 1, 2, 3 are over there. You can change out these to Fibo pivots or standard pivot. I am using standard pivot, though I am not using kite for pivot setup because there are only 3 resistances are there. So I am using TradingView platform for most of my studies. So my basic setup is very simple setup. I use only price action. I check out the candles only. I have placed my pivot traditional 15-minute or standard pivot. I use ATR stop loss method. So I always place ATR over there. Okay. So it will give me a exact idea that I have to trail at that level. Okay. So KPR mill also very good in uptrend level. You can check out that. Okay. So here is almost 32 plus traders have sent the request to ask the question. I will be allowing one by one, maximum as possible. Okay. Red Sword, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. नमस्ते सर. सर थोड़ा पोजीशन साइजिंग के बारे में बता दो और उसके बाद मेरे को एक और क्वेश्चन. Suppose if we are telling about the position sizing, तो मैं जब भी कोई भी पोजीशन साइज लेना होता है तो सबसे पहले मैं 15,000 का लेता हूँ. 15,000 is equal to one lot of IPO. Okay, so first of all my investment will be 15,000 to 30,000. 13,000 is equal to 2 lots of IPO. Now whenever I have built the conviction, मेरा conviction जब भी बढ़ने लगता है तो मैं उसमें तभी उसमें मल्टीपल्स देता हूँ. अदरवाइज मेरा 15,000 का 20% चला गया, दैट मीन्स मेरा मैक्सिमम लॉस विल बी 3,000 to 4,000 रुपीज. और सपोज आई एम रॉन्ग, यस, suppose I am wrong, then my maximum loss will be 3,000 to 5,000 rupees in my investment. Suppose I may be right. Suppose you are checking the Anupam Rasayan. Suppose I may be right and I have strong conviction. मैंने देखो अभी भी ये 990 लेवल पे भी मैंने बाय किया है, अभी भी अनुपम रसायन. क्यों? क्योंकि वीकली ब्रेकआउट भी हो गया, वीकली ब्रेकआउट सस्टेन भी हो गया. मे दिस हैपन दैट ये कंसोलिडेट करे 1 महीने तक, 2 महीने तक, यही इसी रेंज में 1020 से लेके 950-60 के बीच में महीने तक सस्टेन महीने तक कंसोलिडेट करे. फिर से एक दिन आएगा ये फिर से 10-15% की ऐसी मूव दे देगा. अपने को उसी दिन का वेट करना है. मतलब आप एक स्टॉक को पकड़ लेते हो और उसको राइड करते हो अच्छे से जब तक पूरा. यस.
क्योंकि देखो कन्विक्शन जिसमें उसमें क्वांटिटी ऐड करो ना, फिर मैं हर वीक पे जाऊंगा, हर वीक एक स्टॉक लूंगा, एवरी वीक आई बाय दैट, देन देयर विल बी अ 70 to 80 स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। तो मैं कब उसको ट्रैक करूंगा, कब उसमें प्रॉफिट बुक करूंगा, कब मेरी कैपिटल रिकवर करूंगा, तो कैपिटल आपकी जाती रहेगी, समझो, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। अंडरस्टूड और अच्छा सर, वो जो 15,000 था वो आपका कितना परसेंट है कैपिटल का? फॉर एग्जांपल किसी का 100% अगर कैपिटल है तो फर्स्ट हाँ आप हाँ, कितनी ट्रेड्स में डिवाइड करते हो उस कैपिटल को? एक्चुअली देखो, as far as my capital is concerned, I have divided that capital into 4 to 5 segments. Okay. Suppose I have one segment is for intraday playing. Okay. That quantity or that capital I am using by collateral of my short term investment. तो मेरा सपोज जेम फाइनेंशियल में मेरा अकाउंट है, तो मैंने उसमें जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जितने भी स्टॉक्स रखे हुए उसको पूरे का पूरा कोलेटरल कर दिया, दैट आई एम यूजिंग फॉर इंट्राडे ट्रेड। ओके, तो ये मेरा पूरा कैपिटल हो गया। सेकंड, आई एम यूजिंग इन आईसीआईसीआई डायरेक्ट, दैट इज ओनली अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो सपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सपोज आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, सच टाइप ऑफ बिग प्लेयर्स आर, आईटीसी है, सच टाइप ऑफ बिग स्टॉक्स एंड बिग are there in my ICICI direct account. Okay. अभी रिसेंटली मैंने ज़ेरोथा में एक अकाउंट खोला है, तो ज़ेरोथा में मैंने स्लोली स्टार्ट किया है, मैंने एक दो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो उसके ऊपर मैं अभी ये ट्राइंग कर रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए डाला है, तो ज़ेरोथा में मैंने क्वांटिटी डालनी चालू की है। तो मैं अगर आपको भी ये बात करूँ कि मैंने कौन से स्टॉक लिए हुए हैं, तो सपोज आई हैव टेकन आउट द, अभी मैंने बात की केपीआर मिल्स, I have selected, I have taken out the JBL Industries. Suppose you check out the chart of the JBL Industries. Might you can open the chart of the JBL Industries, please? Yes, open sir. the chart of JBL, मतलब Jubilant Industries. Suppose you open the Jubilant Industries chart. Check out the chart and check out the breakout level of weekly. Suppose you are talking about the investment, then you have to use only weekly chart. Now check out the weekly chart and check out that on 9th of August, it have made high of 595, around 600 level. That is also a perfect R4 level. Understood or not? Now on 25th of October, it have made high of 620. Again revert back towards 455 level. Now this is the one top. This is 25th October is the second top. Now whenever any stock gives you double top breakout with weekly resistance, it will give you a strong breakout. Now check there. Last week it have given a breakout of R4 and R5, and that two peaks 630, 600 levels simultaneously at a time in a single week. It have closed at 765 level. Understood or not? Yes, Check sir. this. तो अभी आप उसको मिनिमाइज करो, वो चार्ट, मिनिमाइज द चार्ट. Now minimize the chart. There is nothing. If you see till 2012, there is nothing in the chart. Only air in the chart. Also above R5, nothing in the chart. Only air. Now we have to glide over this. अपने पैराग्लाइडिंग में बैठ गए, बराबर है. अभी क्वांटिटी स्मॉल है, अभी ये 800 का लेवल ब्रेकआउट कर देगा तो मेरी क्वांटिटी अभी उसमें डबल हो जाएगी. अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि why 800 level I am waiting for the 800 level to break out. क्योंकि it was a weekly high. Yes, it was a weekly high of that last week. It have made a weekly high. Suppose you convert that chart. Suppose you convert that chart into daily chart. Now check out the daily chart. आप डेली चार्ट में आ गए? हाँ सर, आ गया. अभी डेली चार्ट में आप देखो 762 क्या है? Exit R4. Yes, sir. Exit R4. That means it is at a particular exact resistance level of R4. It have made 800 level high. Now check out the R5 830 level. मतलब कि R5 अभी भी डेली में R5 ब्रेकआउट करना, बाकी है. अंडरस्टूड और नॉट? तो मैं अभी 800 लेवल पे ऐड नहीं करूंगा. अभी मैं कौन से लेवल पे ऐड करूंगा? R5
हाँ R5 के ऊपर क्लोज होने के बाद में ऐड करना। अंडरस्टूड? आपको Yes, लॉजिक sir. समझ आ गया कि नहीं पिवोट का? आया सर। यस। तो अच्छा सर, मेरे को एक आप और क्वेश्चन था। हाँ बोलो, पहले हाँ कंप्लीट करो। हाँ जी बोलिए बोलिए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक टाइम पे आप मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स के अंदर रहते हैं, मतलब कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स के अंदर रहते हैं? इंट्राडे में या इसमें? नहीं, इन दिस वन, सपोज इन रीटेल सच वाले। मेरा 5-7, मैं तो देखो कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 5-7 ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-7 ट्रेड ले, 15-15 हजार ही डालने हैं, नहीं कितने डालने हैं अपने को, समझो आप। आपके पास कैपिटल कम है तो 5-5 हजार डालो। अंडरस्टूड और नॉट? 5 यस हजार सर, डालो। अंडरस्टूड। अभी वो ब्रेकआउट सस्टेन कर देता है तो 5 हजार की जगह दूसरी बार जो 5 हजार डालने वाले उसमें डालो। जब भी वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो सेकंड टाइम सपोज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज, देन दैट 5,000 रुपीज यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी? 5,000 टू 10,000 रुपीज, क्वांटिटी आपकी डबल हो जाएगी। मतलब कि दूसरी बार अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो नए स्टॉक में मत डालो, इसमें ही डालो, क्योंकि इसमें कन्विक्शन आपका क्या हो गया? डबल कन्विक्शन हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो जब भी कन्विक्शन यस डबल सर। होता है तो वेट मत करो, उसमें बढ़ाओ क्वांटिटी। एक बार, 2 बार, 3 बार फेल हो गए, लेकिन जब भी पास होना चालू करोगे आप तो आपको अल्टीमेटली वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला पास होने के बाद। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा सर, आप ट्रेल कैसे करते हैं? ट्रेल मैंने बोला ATR स्टॉप लॉस में डालता हूं, ये R5 R4 को भी मैं यूज करता हूं, और उसमें मैं ATR डालता हूं। वीकली लो जो भी है, वीकली कैंडल्स जैसी बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तो वीकली लो भी कंसिडर करते हैं हम, बराबर है। लेकिन जनरली मैं क्या रखता हूं, जब भी मुझे 90,000 टू लाख रुपीज का अगर प्रॉफिट आ जाता है, देन आई कैरी स्मॉल क्वांटिटी इन दैट स्टॉक, बुक आउट द प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इन सेकंड स्टॉक। मैं उसको फिर कंटिन्यूअसली पकड़ के नहीं रखता हूँ 5 साल 10 साल, ऐसे नहीं। उसमें से छोटी क्वांटिटी रखो, बाकी सब निकाल के, क्योंकि ये वीकली ब्रेकआउट तो हर वीक देने वाला है, समझो आप। वीकली ब्रेकआउट का अगर स्क्रीनर आप देखोगे तो हर वीक आपको वीकली ब्रेकआउट देखेगा, हर वीक ब्रेकआउट देने वाला है, तो हर वीक आपको स्टॉक मिलेगा। हर वीक स्टॉक मिलेगा तो इतना तो पैसा है नहीं अपने पास कि हर वीक आप नया पैसा लेके आओ, तो घर बेचना पड़ जाएगा अपने को, सही कि नहीं? जी सर। चलो अच्छा सपोज, सर, हाँ बोलिए। सपोज आप चेक करते हो तो, और एक स्टॉक बताता हूँ, रामा स्टील। रामा स्टील, राम स्टील, एक सेकंड सर। सिर्फ ओपन करिए चार्ट, स्मॉल टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे, check out the chart, check out, draw down the resistance line. Resistance is at 295. It have given a breakout about 295. It is closing around 340 level. Check out the volume below that. Humongous volume sir, all time. Now minimize the chart. Now we are minimizing the chart. Okay. So the volumes in Rama Steel is the highest in last 6-7 years. अभी मैं उसको, आप देखो तो रामा स्टील ने जब भी R5 क्रॉस किया था उसके बाद देखो अब क्या हुआ। Yes. When Rama Steel breakout R5, breakout that level and closing around 174, उसके बाद क्या हुआ? 174 to there is only air, because R5 above R5 only air, 174 to 340. Now check out, minimize the chart. Now check the chart. That resistance was exact resistance at 2018 level. समझे आप? तो रेजिस्टेंस का इंपोर्टेंस क्या है पता चला। 2018 का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 11 अक्टूबर को वापिस आया। क्यों? क्योंकि 2018 वाले जो यहाँ पे ट्रैप हुए थे हाई पे, वो क्या हो गए, पहले तो यहाँ पे रिमूव हो गए, वो निकल जाएंगे। तो उसकी वेट करो, कभी भी ये डबल टॉप की वेट करो। डबल टॉप बन रहा है, बनने दो, डबल टॉप पे मत बाय करो। डबल टॉप सस्टेन हो जाए, उसके बाद डबल टॉप का थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट हो, उसके बाद ही बाय करो। अंडरस्टूड? तो रामा स्टील में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा ट्रेड भी बन सकता है। अगर कुछ न्यूज भी आई होगी पता नहीं है, ये मैं अपना जो मैंने आपको बोला मैं स्क्रीनर बनाया है, वो स्क्रीनर में से ही मैं 1 बाय 1 बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसमें ट्रेड नहीं लिया है रामा स्टील में, ऐसा मैंने ट्रेड एक में ही लिया है। मैंने आपको बोला वो अनुपम रसायन है, वो दूसरा आपको बोला ना रामा स्टील नहीं, रामा स्टील नहीं, सिवा, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स, ये थर्ड में, 3 में ही लिया है।
अच्छा सर, तो आप एंटर कब करते हो? जैसे एक Sir, टाइम, जैसे sorry for फ्राइडे को। interrupting, sir. Sorry for interrupting. Few traders have also yes, requested. yes, yes. You have multiple ask question. Let others give chance. Okay, don't mistake. Okay. Ritesh, sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Yes, make- Mr. Ritesh. Just turn on your mic and you can ask your question. हाय सर, मेरा क्वेश्चन वही था, जैसे आप अभी ये सब स्टॉक्स बता रहे हैं, तो आर यू यूजिंग एनी स्कैनर, और आपको ये कैसे पता चलता है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो? चार्टिंग मैंने बोला ना, चार्टिंग का एक स्क्रीनर बनाया हुआ है। और कुछ नहीं है स्क्रीनर में, कुछ नहीं है। वीकली क्लोज ग्रेटर देन वीकली ओपन, समझो आप। ओके, वीकली क्लोज ग्रेटर देन 1 वीक अगो ओपन क्लोज, मतलब कि दो मल्टीपल वीक्स, मतलब कि मेरा जो वीकली क्लोज है वो 20 वीक और 208 वीक्स का मल्टीपल वीक का क्लोजिंग के ऊपर होगा, मल्टीपल ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद ही मुझे ये स्क्रीनर में ट्रेड देने वाले हैं, उसके बगैर देने वाला नहीं। तो ये स्क्रीनर पर सपोज यू आर यूजिंग, यू आर ट्रेडिंग इन सच टाइप ऑफ स्टॉक, देन आई विल शेयर दिस स्क्रीनर आल्सो, देयर इज नो बिग मैटर इन दिस। ओके, यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट। ओके सर। अगर आपको भी, आप सपोज यू आर यूजिंग एनी स्ट्रेटेजी, you just have to google it, weekly breakout screener charting. Okay. Then there will be multiple screeners in the Google also, charting also. Many people have said that screener in charting, they are open also. You can use it. Check out the stock. Suppose there is a stock which gives you weekly breakout, check, confirm it with chart also कि अगर ये वीकली ब्रेकआउट ये चार्ट क्या स्क्रीनर दे रहा है तो एक्चुअली है कि नहीं। तो मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसे भी मिलेगा कि चार्ट का स्क्रीनर कुछ बता रहा है, वीकली ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो उसमें आप 2-4 स्क्रीनर आपको मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी एक पकड़ लो, नथिंग बिग डील इन दैट। ओके, उसमें यू कैन कस्टमाइज दैट स्क्रीनर आल्सो। यू कैन यूज RSI अबव 60, ओनली स्टॉक कैन कम इन माय रडार ऑन माय स्क्रीनर। यू कैन यूज मार्केट कैप ग्रेटर देन 2000 crore, only come in my radar. You can add multiple lines in your screener and you can modify that screener as per your requirement and as per your customization. You can change out the screener, whatever you are trading. Suppose you are trading in future only and you want the stock which gives weekly breakout in future stock, you can change out from cash segment to future segment only. Okay sir, thank you. Thank you very much. Thank you. Sir, इतने सर टाइम मिलना से थोड़ा और क्वेश्चन ले लें if you're comfortable. Yes, अपने 9:40 हुए हैं. We have given almost around 1 hour and 15 minutes. We can go forward more 10-15 minutes also, no problem. Okay. So yes. Yes, anyone have any question? Ashish Thakkar sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Okay, by the Twitter handle name, yes, Ashish sir, you can speak. Sir, I would request Yes, you, Mr. Vasan. I would request you, मतलब स्टॉक्स पे तो आपने काफी सारे इंफॉर्मेशन दे दी सर, थोड़ा इंडेक्स पे भी अगर आप कुछ करें, थोड़ा नॉलेज दे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 वगैरह। इसमें बैंक look out निफ्टी या there, Nifty 50. Yes, yes. आप सब there is noise cancellation are there. देखो, आप निफ्टी 50 पकड़ो या बैंक निफ्टी पकड़ो, support resistance are common for everything. Support resistance are common for everything. So you check out any of the instrument. Support and resistance are everything. Okay. Now you have to check out in what time frame you are using. Can you please turn off your mic because there is sounds coming from your kids. आप अगर ट्रेड करते हो तो आप सपोज इंडेक्स को पकड़ लो, आप इंडेक्स को आप डाल दो आपके स्क्रीनर में, उसमें पिवट आप डाल दो. ओके, नाउ मेनी पीपल आर यूजिंग दैट इंडेक्स मेनली. सपोज मैं यूज करता हूं, बैंक निफ्टी ओपन करता हूं. ओके, चेक आउट द बैंक निफ्टी, कन्वर्ट दैट बैंक निफ्टी इनटू वीकली चार्ट. ओके, तो देखो यहाँ पे वीकली में भी, यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस 15 फरवरी 2021 का R1 था. ओके, R1 के बाद वो R2 का ब्रेकआउट दिया ही नहीं.
नाउ मेनी पीपल आर यूजिंग 1 आवर. मितेश, सपोज मितेश की बात करें तो मितेश 1 आवर का यूज मैक्सिमम टाइम करता है. सपोज आई हैव, आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल में भी गए होंगे. आई हैव सेड बैंक निफ्टी 1 आवर चार्ट. इफ यू चेक आउट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी 1 आवर, check out the chart 1 hour, insert pivot in your 1 hour chart. Might you have already inserted. Check out the chart. Now check out the chart and 1 hour chart. You can see that there is a big gap over there when bank nifty was gap down on 20th of December. That gap have been filled here. Check this. Now bank nifty have closed above R1. Check this. Bank Nifty have closed above R1. It have sustained R1. Check this. Suppose you check out the Bank Nifty 1 hour chart and you insert the pivot resistance inside that chart. You can check that Bank Nifty have sustained the R1. It have revert back towards R1 in second hour. Again revert back. Again on fourth candle it have revert back. Again fourth came back. That means Bank Nifty have successfully closed above resistance 1. Again Bank Nifty have successfully filled the gap over here. तो मैं एक ही चीज देखता हूं कि ये R1 के ऊपर क्लोज हो गया, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया है. तो मैं ये 1 आवर का जो भी 4, 5, 6 कैंडल है उसका लो पकड़ के अगर मुझे छोटा वाला ट्रेड भी लेना है तो भी मैं ले सकता हूं. समझ रहे हो कि नहीं आप? तो लाइकवाइज दिस मैं बैंक निफ्टी में भी कर सकता हूं, लेकिन मोस्टली वेन एवर आई हैव टू यूज इंडेक्स तो मैं उसमें 15 मिनट ब्रेकआउट या वो वगैरह यूज करता हूं. मैं सच इंस्ट्रूमेंट में यूज मैं वीकली ब्रेकआउट यूज नहीं करता, बिकॉज वीकली ब्रेकआउट को स्टॉक्स और उसके लिए ही बना हुआ है. बैंक जाओगे तो बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम हो जाएगा. ओके, तो आपको आइडेंटिफाई ट्रेंड करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम पकड़ लो तो भी चलेगा आपको बैंक निफ्टी का. ओके ओके Yes. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Yes, any more questions from anyone? My Twitter app just got crashed, so please send me the request again if anyone have questions, because already 20-25 request was there. Yes. Okay. Just a minute. Hello. Yes, learning never end. You can ask your questions, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो करते आए हैं. मेरा ये क्वेश्चन था कि जो वीकली आप बात कर रहे हैं कि वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट होते हैं, तो क्या आप वीकली कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं या फिर वो जैसे ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं? पहला क्वेश्चन नहीं. यस. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि यदि कोई स्टॉक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो उस कंडीशन में हमारे पास R1 R2 वगैरह नहीं होंगे, तो हम उस कंडीशन में जो है अपने स्टॉप लॉसेस मतलब अपनी ट्रेड को कैसे ट्रेल करें? Yes. Very good question. Suppose any stock is at around its lifetime high, so you have to just place your exponential moving average on your chart. 21 days और 50 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप आपके चार्ट पे लगा दो. वो जब तक उसको सस्टेन करता जा रहा है वो आपको पकड़ो. सपोज आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलो. रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप अगर चार्ट खोलोगे, मैं ओपन करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज. नाउ इफ यू इंसर्ट द रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट एंड उसमें 200 दिन की मूविंग एवरेज डाल दो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. Check out the Reliance Industries chart and insert the 200-day exponential moving average on the Reliance chart. Check out the chart. Reliance is also one time at lifetime high. Yes or no? Around 200 and 2300 it was lifetime high. Yes. तो अगर आप उसको आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर 200 दिन की आपने डाल दी. Check out the chart of the Reliance Industries. Yes.
अभी मैं आपको देखता हूँ, आप चेक करो 27th of July 2021 it have taken a strong support at 200-day exponential moving average, then revert back towards 2700. Now same happened here again on 21st of December. It have touched that 200-day exponential moving average and it have again went up. Abhi, suppose this is a very big and large exponential moving average. Now suppose you are trading in this stock and you have to carry forward this stock and you have to book out the profit around whenever it break out. You can use ATR trailing stop loss. ATR trailing stops. Check out the ATR trailing stops in your whatever instrument you are using. Okay, you can use ATR trailing stop loss and use as a moving average नहीं यहाँ पे ATR, and you can use points square waves. Okay, check that. So you can use ATR stop loss here. So whenever your stock going towards up and up and up and up, your ATR also move towards its upside. Now whenever your stock gives another green candle, your ATR automatically going upside and gives you another or more stop loss level upside. So you can likewise trail also. Now suppose ATR stop loss is far below your risk level, then you can change the multiplier of ATR from 3 level to 2 level or 2 level to 1 level also, you as per your requirement. So suppose on at the rate of 2630, ATR given a sell signal in Reliance Industries. That means whenever ATR given buy signal, when on 6th of August 2021 at the rate of 2100, ATR given a buy signal, suppose you are trailing that stock at that rate, and on the rate of 2600 had given a sell signal. That means it is a time to book out the profit. Means what I am telling you, whenever you have to buy such stock, you have to buy always above your moving average, buy always above your ATR only. Suppose any stock is trading below its moving average, exponential moving average of whatever you are trailing, 21, 50, 200, whatever. Suppose it is trading below that level, you don't have to take trade in that stock. Okay, understood or not? या श्योर सर. और फर्स्ट ओके, और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन Yes. कि आप वीकली कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं या फिर जो है उसी टाइम मतलब ट्रेड नहीं एक्सक्यूट करते नहीं, हैं? सपोज देखो, yes, मैंने suppose I have told you that I have selected suppose Alpha Laboratory I have selected from my screener. Then I have opened the chart of Alpha Laboratory. I have checked the chart of Alpha Laboratories and I have given it have given me conviction also that this is a strong stock. ये वीकली ब्रेकआउट का स्क्रीनर मुझे वीक क्लोज होने के बाद ही पता चलता है. तो वीक क्लोज होने के बाद ही कैंडल क्लोज होती है. Then only I can realize that candle of weekly chart have closed above resistance or below resistance. That weekly close have given me breakout above that level or below that level. Then only I can check. Or weekly, if you are following weekly chart, then there is no hurry because whole week is with you from tomorrow to till Friday. Okay, so you can take out trade on Monday also. Whenever you check your trade on Friday after week closing. So always prefer, suppose you are preferring weekly breakout, then always wait for the weekly candle close. Suppose you are preferring or you are checking the daily breakout, then always check out the closing of the daily candle. Then only you take out the trade next day. Okay. सर इसमें एक क्वेश्चन है छोटा सा. आई एम सॉरी मैं काफी लंबा खींच रहा हूँ. हाँ जी. मान के चलिए यदि वीकली ब्रेकआउट के हम कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहे हैं और इनकेस हमारी जो वीकली कैंडल जो जिसने ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट पे ही 40% के आसपास या 20 या 25% के आसपास ब्रेकआउट से ऊपर जा चुका है, देन हमें क्या करना चाहिए? हाँ. देन Yes, take out the trade. डू वी नीड टू वेट फॉर द रीटेस्ट लेवल या फिर वो 30% ब्रेकआउट होने के बाद जो है हम उसमें दोबारा से मतलब एंटर कर जाएं फोमो के डर से, या क्या करें? नहीं, देखो आप क्या फॉलो करते हो. देखो, अगर मैं आपको किंगफा की बात कर, किंगफा
KINGFA किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, सपोज इट हैव गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ वीकली चार्ट, ओके, तो आपको अगर आप चेक करो कि वो R5 पे है, R4 पर है, क्या है, अगर आपको देख रहे हो कि वो R5 पे भी ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको दूसरे वीक ही एंट्री ले लेनी है. सपोज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन ईयर इट्स चार्ट, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेली चार्ट. अगर आप उसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करो, तो डेली चार्ट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने डेली चार्ट पे भी रिटेस्ट दिया है, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहा है, तो ये मेरा परफेक्ट ट्रेड है. आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हो उसको डेली, पहले वीकली में ब्रेकआउट में चेक करो, उसके बाद डेली चार्ट में भी कंफर्म करो कि क्या हो रहा है, डेली चार्ट में सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो. कोई फोमो वो कोई नहीं, देखो क्या जाएगा, मैक्सिमम रिटेस्ट करेगा या ब्रेकडाउन दे देगा तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, मैक्सिमम तो आपकी जान तो नहीं ले जाएगा ना. अपना मितेश का नियम है, मितेश का एक स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है, एग्जीक्यूट द ट्रेड, मैक्सिमम क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जाएगा, जान नहीं जाएगी. अंडरस्टूड और नॉट? तो आप जो भी, मैं जो भी मेरा ट्रेड लेता हूँ, सपोज 15,000 या 30,000 रुपीज, आई टेक आउट द ट्रेड विथ 15,000 और 30,000 रुपीज, तो मैक्सिमम लॉस 5,000 to 6,000 आई कैन बेयर इट. बट अगर वो सस्टेन हो गया, अगर नेक्स्ट वीक भी इतनी बड़ी 20% की कैंडल दे दी, तो एक ही वीक में मेरा पूरा प्रॉफिट आ जाएगा, तो मुझे दूसरे मेहनत करनी भी नहीं पड़ी. अंडरस्टूड और नॉट? तो इस तरह से आप कर सकते हो. Okay, sir. Thank you so much, sir, for all the questions. Thank you very much. Yes, Hitesh sir, one question देखो, which I have got is, what is the significance? I would like to give you one stock which is very good stock. Check out the stock of Smart Link Holding. पर थोड़ा कौन छोटा वाला स्टॉक है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, स्मार्ट लिंक होल्डिंग. Check out the Smart Link Holding. I hope everyone have opened the chart. Smart Link Holding. Now check out the weekly breakout of the Smart Link Holding. तो देखो उसमें वीकली ब्रेकआउट दे दिया एट अराउंड 141 रुपीज, दे दिया कि नहीं? Yes. नाउ चेक आउट, अगर आपने उसका वेट किया होता कि वो ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है, तो वो 140 रुपए से 230 रुपीज एक ही वीक में आ गया. समझो, 140 रुपए से 230 रुपए एक ही वीक में आ गया. वो वीकली ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपन हुआ मंडे को, सस्टेन भी किया, सस्टेन करने के बाद भी कंटिन्यूअसली वो ऊपर ही जा रहा है. सपोज यू कन्वर्ट दैट स्मार्ट लिंक होल्डिंग weekly chart and convert it into the daily chart, you can check that it have given a break gap up open above R5. Yes. Gap up open above R5. Might it happen that it is within a minute closed in upper circuit? Might this will be happened. लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे? ले लेने का, पूछने का नहीं किसी को भी, ले लेने का. मैंने भी ले लिया है. मैं अगर देखना है तो मैं वीडियो डालूंगा, स्क्रीनशॉट डालूंगा, मेरा स्मार्ट लिंक होल्डिंग का वीडियो डालूंगा. मैंने 207 रुपीज 70 पैसे में, मैंने 207 रुपीज 70 पैसे में, देखो यहाँ पे, ऑन द डेट ऑफ 30 दिसंबर अराउंड 29 और 30 दिसंबर, 29 दिसंबर को, when it have given a high rate of 207, it have closed around 183, 190. इन सेकंड डे अगेन वो ऊपर चला गया और ये 230 पे क्लोज हो. अगर ऐसा होता है, वीकली ब्रेकआउट होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद भी R5 के ऊपर होता है, देखो ये कंटिन्यूअसली सस्टेन करता है वीकली चार्ट, स्मार्ट लिंक होल्डिंग. अभी अपने को यही चाहिए. देखो अभी नाउ आई एम ऑलमोस्ट अराउंड 11% profit. Almost I am in 11% profit. Quantity you cannot imagine. I have only 100 quantity. 20,000 rupees, 100 quantity only. So suppose it gives me loss of 3 continuous lower circuit of 10%. तो भी मेरा 6,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, समझो आप. लेकिन अगर ये मेरा ब्रेकआउट सस्टेन हो गया तो मैं अभी से 10-11% का प्रॉफिट पाऊं. एंड if it break out, suppose you convert this chart into weekly chart में कन्वर्ट कर लो आप और देखो 230 के ऊपर क्या है, around 240. it is a weekly resistance plus R5 around, yes, R5 है, तो R5 के ऊपर तो हवा ही हवा है. हवा वाला पिक्चर का गाना जुना पुराना है ना, वो निकालो सुनो, हवा ये हवा.
बस हवा में ट्रेड करो, पैराग्लाइडिंग करते रहो, फिर शांति से 20,000 निकाल लो, प्रॉफिट को खींचते रहो हवा में। अंडरस्टूड और नॉट? तो मेरा क्वांटिटी देखो 20,000 का लिया, क्या जाएगा यार, 3 सर्किट लोअर मारेगा 10% या 20% का, अभी 2 सर्किट मारेगा तो भी मेरा मैक्सिमम जाएगा 8,000 रुपया, समझो आप। तो क्वांटिटी ही इतनी रखो इनिशियल ट्रेड में। अभी ये R5 के ऊपर क्लोज होगा तो मेरी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, या इसमें डबल ऐड कर दूंगा, या 100 की जगह दूसरा 100 ले लूंगा। अंडरस्टूड और नॉट? मैंने यही किया। देखो अब मैंने अभी लास्ट फ्राइडे को एक स्टॉक लिया है मैंने, इसका लिया जैसे था, आप क्या स्मार्ट लिंक के बारे में आप बात कर रहे थे, तो इन ये पूरा सेशन में वी आर स्पीकिंग अबाउट स्टॉप लॉस। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका स्टॉप लॉस स्मार्ट लिंक में 170 या 175 तक ही रहेगा। एक मिनट में निकालता हूँ स्मार्ट लिंक। यस, देखो अभी देखो ये डेली चार्ट में आप कन्वर्ट करोगे, अगर suppose you convert that into daily chart, there is a red candle on 29th of December. Yes. On 30th December, it have reverted back from 176 or 75 level to, तो ये जो भी लेवल पे रिवर्ट हुआ, तो ये लेवल तो अभी मेरा स्टॉप लॉस हो ही जाएगा 175, समझो। तो मेरा एंट्री सपोज 207 रुपीज है, 175 तो मेरा 25 रुपीज, मतलब मेरा 12% जितना स्टॉप लॉस मेरा हो गया 12%। तो वॉट एवर आई एम प्लेसिंग ऑन टेबल एज अ स्टॉप लॉस, इट इज गिविंग मी मोर फार देन प्रॉफिट। अंडरस्टूड? तो प्रॉफिट उतना मिल जाता है आपको जितना आप टेबल पे रखते हो। तो उसमें आप आपकी खुद की जितने भी मेथड से मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो भी डाल सकते हो, कुछ भी। देखो एटीआर, अगर आप एटीआर आप इसमें डाल दो, सपोज आई हैव टोल्ड यू अबाउट एटीआर स्टॉप लॉस मेथड, तो आप अगर एटीआर की बात करो तो एटीआर मैंने डाल दी उसमें, इसमें एटीआर का मैंने मल्टीप्लायर 2 पे रख दिया है, ओके कर दिया। अभी एटीआर का मूव मैंने 2 पे रख दिया, तो एटीआर अभी 190 के ऊपर मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना है। It is giving me a trailing stop loss of around 190, and previously it is giving me stop loss around 172. What I am telling you, मैंने आपको जो बताया कि 172, तो प्रीवियसली मुझे 172 दे रहा था। अभी जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे ये एटीआर ऊपर चलाता जाएगा, बराबर है? Okay. Yes, sir. One last question. This guy was asking me for last 1 hour से वो मैसेज ही टाइप कर रहे। दिवांशु सर, I allowed you to speak. आप माइक टर्न ऑन के बात कर लो। And one more request, that is one small request before answering this question, that is many traders have raised their request to ask the questions, but because of time constraint, सर ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 क्वेश्चन आना शुरू हो जाए। मेरा आप 5 से 6 बार ट्विटर आप क्रैश हो चुका है। तो one small request is, don't mistake me. If a small request to Hitesh sir ki after this session, if anyone is asking question in the comment section, so try to answer it, sir. मेरा request है, okay? Suppose such type of requests are coming, then we will arrange one more Twitter space next week also. Don't worry. Yes, अपने देखो किसी का भी query है, देखो we are here to make you independent for selection of stock, make you independent of earning the profit. प्रॉफिट अर्न करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो। समझो, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो तो आपका अधिकार है, आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो डिपेंड करता है आप कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर ही आपको अच्छा वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अगर वीकली ब्रेकआउट का स्क्रीनर यूज भी करो, वीकली ब्रेकआउट में आपको 25 स्टॉक आएंगे, 25 में से आपको एक भी स्टॉक अच्छा नहीं लगे तो एक में भी ट्रेड मत करो, और 25 में से आपको 5 स्टॉक अच्छे लगे तो 5 में भी ट्रेड करो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्रेकआउट आया है रिटेस्ट होगा ही, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ऐसा भी रूल नहीं है कि ब्रेकआउट आया तो रिटेस्ट नहीं ही करेगा, वो भी कोई रूल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कैसा स्टॉक है, कैसा इंटरेस्ट है बायर सेलर का। स्मार्ट लिंक अभी बताया, देखो वो रिटेस्ट किया कि नहीं किया, वो पब्लिक इसका वेट ही करती रही और रिटेस्ट किया ही नहीं है। अंडरस्टूड? वेबसोल एनर्जी मैंने इंट्राडे में वेबसोल का ट्रेडिंग किया था,
मैंने इंट्राडे में 102 रुपए पे लिया था, 109-10 के रुपए के अराउंड निकल गया था मैंने। देखो वेबसोल देख लो, यस, वेबसोल का देखो तो जब भी उसने वीकली ब्रेकआउट दिया था, आई हैव ट्रेडेड ऑन दैट डे। Whenever it have given a breakout of weekly, check out the Websol energy chart. उसने जब भी ये वीकली ब्रेकआउट दिया था, मैंने उसमें आई हैव डन इंट्राडे ट्रेडिंग इन दैट स्टॉक। आई हैव ट्रेडेड अराउंड 103, आई हैव एग्जिटेड अराउंड 110, 12, 11 लेवल। उसके बाद वो वीकली रिटेस्ट किया। इफ यू हैव ओपन द चार्ट, चेक आउट द चार्ट ऑफ वेबसोल एनर्जी। जैसे R4 क्रॉस हुआ उसके बाद सीधा R5 क्रॉस होके वेबसोल एनर्जी, yes. Then after weekly breakout and closing above the R3, it have retested that level. Retest करने के बाद देखो एक ही वीक में 98 to 156. Yes. अभी देखो वीकली ब्रेकआउट दिया था वो अब वॉल्यूम देखो नीचे। वीकली ब्रेकआउट दिया था वो वॉल्यूम देखो, हाईएस्ट वॉल्यूम, कितना जोरदार वॉल्यूम। लास्ट 10 साल भी निकाल लो, उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है। हाँ यार, कितना बहुत बड़ा वॉल्यूम। अभी देखो एक लॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 175-77 लेवल पे। हाँ, इसमें यस, ओके 2017 का 2017-18 का जनवरी 2018। अभी इसके ऊपर ये गोली होगा। ओके, तो ये जो भी 2017-18 में जो फंसे हुए हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो पकड़े रखे रहते हैं, शेर पकड़े रखे रहते हैं, अभी वो बेचारे फंस गए। वो 170 लेवल से 12 रुपए भी आ गए थे। यस, तो वो निकल नहीं सकते थे। ये अभी एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है। आप सुन लो, ये बहुत ही अच्छा वाला ब्रेकआउट देगा अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गया तो। वेबसोल एनर्जी वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है, R5 के ऊपर है। अगर आप वीकली कैंडल देखो तो वीकली कैंडल को आप प्राइस एक्शन देखो तो इट इज अ कंप्लीटली वीकली बुलिश मारुबोजू कैंडल। यस, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल फॉर बुलिश। तो ये तो मल्टीपल तरफ से आपको बोल रहा है। ओके, तो अगर इसमें चांस मिलेगा तो मैं इसमें भी ट्रेड करूंगा। ओके, great. Now, so thank you so much for everyone attending this session. And as Ritesh told, I will be requesting him to plan one more session. So stay connected with us. You can follow us and stay connected with us.